So now we have an entity called as student, right? Yes, sir. And we have the attributes of that student. Whatever his attributes are: roll number, name, email, and age, right? After that, which is the primary key, roll numbers, that is the ID attribute, so it has to be underlined in a ER diagram. Always underline the primary key. The next we have our name and roll number, sorry, email, and we have age. Okay, now graduation course, what can we say? What is the relationship? What is the relationship between this and graduation course? Yes, guys. So, or let's say what course he is doing. So that course will have a course ID and course name, right? Make sense? Okay. Course ID and course name. How will you map course to student? One to many. Yes. So many student do one course, right? So now we have the student table. Now we have to create the course table. And what happens once primary key goes to many as foreign key? So what happens, which is once primary key will come here as a Course ID. foreign key, right? So this will be my foreign key over here. This will be my primary key over here. And this will be my primary key over here, right? So now what we have to make, we have to make one more entity as course and reference it with the student with one to many. So like this we can play around with multiple entities. So this is one entity, this is another entity. Okay, so let's make entity called as course. So I come back over here, I go to my entities and right click on it and add a new class. It's going so fast. So I right click on this entity package, go to new and make a new class. Okay, so whatever name you wish to give to the class you can give. So let's say I will give the class name as course. Okay, what all will we give in the course? Okay, course ID and the private integer course ID and private integer
course name. Okay. So this will be my primary key. So what do I give? At id and at what? Generated value. So generated value. And what strategy are we using? Get value and strategy equals to generation type auto. Auto. Okay. Import the id from persistence and no need to give for course name. And what do I need to annotate this as? Add entity So, and then annotate all the default what we had given for student. Data, no args, builder, take all of them. Take all of them. Import persistence. Okay, so this is my short and sweet. Okay, now one course will have many students, right? So I can have a yes, list of students doing a course, correct? yes, sir. So I can have over here what? List of students. List of student and I can say stud list. So import the list and now here I can annotate this as one to many. Okay, so in the one class, I'm in which class? One's class, right? What will I say? At the rate one to many. So I give a control space bar one to many. Okay, and now what is a cascade? Cascade means if I delete that course, so if I have 3 students doing BBA and now BBA is no more, I am no more teaching BBA, the college is no more offering BBA, so will those 3 students record be there? So if the course is deleted, all students mapped to that course will also be deleted, so we'll have a cascading effect. Okay, so you can say what cascade you want. Okay, so I will have a cascading effect on all the DMLs, update, delete. Okay, so I'll say cascade type as all. Dot all. And now in this table, now then the foreign, this should go as a foreign key in which table? Which table? Student table. So I come here and in my student table I add this. Okay, and now what I'm doing is I'm doing the referencing now. Now I am doing the referencing over here. So one to many. Okay, so I'm joining column now. So at the rate join column. Okay, so in this table, which is the column, which is the primary key over here, which is the primary key, and I am referencing which table? I am referencing this entity over there, which is the foreign key. Course ID. So you say referenced column. What you say? Reference column name is also course ID. Okay, so this is the primary key of this column, and this is the, and now this all has been mapped to this list of students. So when I fetch the course, it will fetch me details of all the students who are doing that course. So even this student entity has been modified to accommodate the course ID. Okay,
So now let's go to the controller and try to add a course. Okay, so if I go to the controller and if I say add course, so the course is a new entity, so the course will have its own service, course will have its own service, course will have its own repository. Okay, so let me go and create that. So in the repository I right click, I say new interface. Okay, course repository extends which repository, JPA. JPA repository. Okay, now which is the entity which I'll be working on? Course. And which is the primary key of course? Course ID. Type integer. So I've made the repository. Let me go and make the service also. Service will be a class, right? सर हमने कोर्स में स्टूडेंट और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट क्यों दिया? ताकि जब मैं वो कोर्स को फेच करूं तो वो कोर्स कौन से स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड भी मेरे साथ जेसन के अंदर आ जाए। तो अगर जो है मेरे पास अभी ये मेरा टेबल ऐसा दिखेगा ना, पहले ये बनाते हैं अपन, पहले ये टेबल ऐसा दिखेगा तो शॉर्ट एंड स्वीट टेबल रहेगा, ये तो ज़्यादा मच नहीं लेगी इसमें। तो ये टेबल ऐसा दिखेगा सिंपल सा। ठीक है, तो अगर मेरे पास BSCA है, BCS है और MCA है, या जैसे तुम लोग का ही कर लेते हैं ना, BBSCA कर लेते और MCA कर लेते। ठीक है, तो मेरे पास ये कोर्स आईडी है और ये कोर्स का नाम है। ओके, और मैंने कर दिया कोर्स आईडी 1 BBSCA और कोर्स आईडी 2 MCA। ठीक है, और जब मैंने स्टूडेंट टेबल बनाया तो एक एक्स्ट्रा कॉलम उसमें ऐड हो गया ना, तो अब ये कॉलम के अंदर ये टेबल में कितने कॉलम होंगे? 4 क्या 5? 4 क्या 5? 5 होंगे ना, तो 2 3 4 और 5। ओके, तो नाउ लेट्स टेक अल्फाबेटिक ऑर्डर। सबसे पहले किसका नाम आता है तुम लोग में से? अलहीना। तो लेट्स टेक नाउ स्टूडेंट अलहीना। So I give her roll number 1 and I give her name, then her email, her age. Okay, email, age, and then which course she is doing. So CID as a foreign key. Make sense? So now I give over here 1 and okay, बस स्पेस नहीं मेरे पास, और एज दे देते जो भी है, और she is doing what? MCA. So I give her what? Course number 2. So similarly 2, let's take another student. Okay, let's take Alice. Alice also, Alice भी वही हो गई। ठीक है, blah blah blah, और Alice भी let's say 20 years की है। Alice is also doing MCA. So what will come over here? 2. Then we have 3. Then we have Ben. Okay, and now we have Ben का email address, some address, and then now Ben is doing, and also is 20 years and he is doing BBSCA. तो 1 है ना। अब जब मैं गेट कोर्स बाय आईडी करूंगा, जैसे हमने कहा था ना, अगर मैं करूँ गेट स्टूडेंट बाय रोल नंबर, तो इफ आई पास रोल नंबर इक्वल्स टू 1 एज अ क्वेरी पैरामीटर, कि रोल नंबर इक्वल्स टू 1, तो जेसन कैसा आएगा बोलो? जेसन कैसा आएगा?
रोल नंबर :1 और उसका पूरा डिटेल आएगा ना। यस सर। पांचों एट्रीब्यूट्स आएंगे ना उसके, कितने आएंगे? 5 है। तो उसके पांचों एट्रीब्यूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? ईमेल वेलकम जो भी रहेगा, ठीक है। और फिर एज आएगा 19 और फिर आएगा कोर्स आईडी भी आएगा, राइट और रॉन्ग? यस सर। सो कोर्स आईडी :1 आएगा। क्या आएगा? मेक सेंस? ओके। ऐसे ही अगर मैं करूं गेट कोर्स बाय आईडी और मैं पास कर दूं C_ID = 1, क्या पास कर दूं मैं, या 2 पास कर दूं, तो क्या करेगा अभी वो? मुझे उसका डिटेल्स देगा ना। तो क्या देगा मुझे वो? C_ID 2, C_name MCA, ओके। और फिर उसके बाद मुझे क्या देगा? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डूइंग MCA। तो फिर लिस्ट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट है ना, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट के अंदर फिर पहला स्टूडेंट क्लोज, कॉमा, दूसरा स्टूडेंट उसके डिटेल्स क्लोज, और फिर जेसन का टाइप समझो, फिर लिस्ट क्लोज और फिर जेसन क्लोज। समझ में आया? तो फिर अभी ये जो है ये इधर भी आएगा फिर अभी, ओके। और ये किस नाम से आएगा फिर अभी लिस्ट? अभी ये लिस्ट किस नाम से आएगा? जैसे की वैल्यू है ना, तो इसका की क्या होगा इस लिस्ट का? जो लिस्ट आएगी उसका कुछ तो की होगा ना। एट्रीब्यूट की होंगे सो वैल्यू। क्या नाम होगा उसका? की क्या होगा फिर? ये हम लोग कोर्स आईडी हम लोग ये कोर्स टेबल का एंटिटी से फेच कर रहे हैं ना। तो कोर्स एंटिटी में कितने कितने वो है? कोर्स एंटिटी में कितने चीजें हैं? कोर्स आईडी, कोर्स टेबल, तीसरा क्या है? तो वो उसका की रहेगा, वो उसका की रहेगा। तो उसका की क्या रहेगा? दैट विल बी द की। आर यू गेटिंग द पॉइंट मैम? यस सर। वो उसका की रहेगा और फिर उसके वैल्यू, उसका की हो गया, राइट। तो इसके वैल्यूज कहाँ से आएंगे? जो जो उसके मैप थे वो सब आ जाएंगे। तो ये एक रिकॉर्ड है ना उसमें, तो ये इधर आ जाएगा रिस्पॉन्स के अंदर। ऐसे ही दूसरा कौन है भाई? एलिस भी है, तो दूसरा रिकॉर्ड एलिस का भी आ जाएगा नीचे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? So you should have an image of what the response will look when you will try to trigger the response. So this will be something of this nature. ये रोल नंबर 1 है, ये रोल नंबर 2 होगा इधर। तो उस डिपार्टमेंट के डिटेल्स के साथ में उसके लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स भी हम रिटर्न करेंगे। गॉट इट? that is the meaning of list of students. Yes, no, maybe. So if you want, I'll show you over here in the controller. So now if we write an endpoint, okay, to you have to add a department first, right? Add a course, right? तो अपन इसी को ले लेते हैं, इसी को टेम्पलेट बना के यूज कर लेते हैं, कि हम लोग क्वेरी पैराम यूज कर लेंगे।
Okay, we'll use the query param only. So tell me, what all changes will we make over here? Add, tell me, add course, right? So add course, and the course ID will auto increment, right? And we just have to pass the course name. That's all. Rest nothing we had need to pass. कुछ है नहीं तो कॉमा भी निकाल दो, जब कुछ है नहीं तो कॉमा भी निकाल दो. ओके, तो ये अपने रिक्वेस्ट पैरम्स हो गए. फिर क्या करेंगे, कोर्स का ऑब्जेक्ट बना लेंगे. अब मुझे सिर्फ किसका क्या सेट करना है उसके अंदर, क्या सेट करना है उसके अंदर, कोर्स नेम। सिर्फ कोर्स नेम सेट करना है ना. तो क्या कर दूंगा फिर मैं, बिल्डर यूज कर लूँ क्या, बिल्डर यूज कर लूँ, बिल्डर यूज कर लूँ क्या. तो कोर्स डॉट बिल्डर, और फिर क्या डालना है हम लोग को, सिर्फ डॉट कोर्स का नाम, क्या, सी नेम, और डॉट डॉट क्या, क्या हो गया इसको. और कोर्स नेम क्या इंट लिया क्या मैंने, ना स्ट्रिंग लिया है. तो फिर कोर्स नेम इंट लिया है क्या, कोर्स नेम इंट कैसे होगा. ठीक है, तो ये हो गया. अभी और क्या करेंगे फिर, अभी C1 को क्या कर देंगे, किसको पास कर देंगे, स्टोर सर्विस को, किसको, कोर्स सर्विस ना. तो उसका क्या करेंगे, कोर्स सर्विस का ऑटो वायर कर लेंगे ना. कोर्स सर्विस छोटा COURSE, और ये S कैपिटल हो जाता है. आइडियली दिस S शुड बी कैपिटल, बिकॉज है ना. अभी इसको इंपोर्ट कर लो. फिर इस कोर्स सर्विस से क्या कॉल करो, मेथड कॉल कर लो ऐड कोर्स. ये मेथड है क्या, नहीं है तो बोलो कि ऐड कर लें. और ये रिटर्न क्या करेगा, कोर्स करेगा ना. इट विल नॉट रिटर्न द स्टूडेंट, इट विल नॉट रिटर्न स्टूडेंट टाइप, इट विल रिटर्न व्हाट टाइप. तो जब अपन ने कोर्स ऐड किया वो ऐड दिखा देगा. और ये बोला टाइप चेंज कर लो उसका, तो कर लो टाइप चेंज, चेंज रिटर्न टाइप टू कोर्स. अभी क्या करने का, यहाँ पर क्या लगेगा अपने को, कोर्स रिपोजिटरी, राइट. तो कोर्स रिपोजिटरी क्या नाम रखेंगे उसका, कोर्स रिपो. उसको ऑटो वायर कर लेंगे. और अभी एक ही कंट्रोलर होता है और बहुत सारे सर्विसेज. यस, कंट्रोलर देखिए रहेगा क्योंकि एंड पॉइंट वही सारा संभालेगा. और फिर उस, यानी कि ज्यादा, एक से ज्यादा कंट्रोलर नहीं बना सकते. नहीं, नॉट नीडेड. कोर्स रिपोजिटरी का सेव फंक्शन कॉल कर लेंगे और वो एंटिटी सेव कर लेंगे उसके अंदर C1. So it will return me whatever this record has been inserted. So that will go to the course service, and course service will then send it to the controller, and I will get the course added. If you want to test it, let's check it out. Okay, and now we will also add the course to the student, right. तो जब हम स्टूडेंट को भी ऐड करेंगे तो उसमें कोर्स ऐड करेंगे ना.
यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका एक और लेंगे सी नंबर और सी नंबर और यहाँ कॉमा दे देंगे। ओके, और क्या करेंगे, s1 डॉट सेट कोर्स id to c number. Perfect. So now whenever you're adding a student, we will also add the course id. I save all this, go to the app and try to run this, and let's see what happens. Then I go to my API doc. Okay, so what we can do in API doc, you see my screen, right? So in the API doc we can make different folders. Okay, so you can, on the plus you can click No, sir. and you can make a new folder, and सर आपकी स्क्रीन नहीं API doc पे जाने के बाद में इधर फोल्डर्स वी कैन मेक फोल्डर, तो स्टूडेंट APIs, डिपार्टमेंट APIs, ऐसे आप उन्हें कर सकते हैं कोर्स के APIs। ये प्लस पे गए तो क्या क्या रहा, न्यू फोल्डर, तो अपन ने फोल्डर बना दिए और उसका नाम लिख दिया कोर्स APIs। तो कोर्स के सारे जितने API एंड पॉइंट्स है वो सब किस में जाएंगे, कोर्स वाले फोल्डर, तो अपना डेटा पूरा अरेंज हो जाता है। कोर्स API, जिसमें कोई API नहीं है, तो अभी समझो अपन एक API ले लेते पोस्ट वाला, ठीक है। ये अगर अपना एक API है पोस्ट वाला, तो कॉपी कर लेते और फिर कोर्स में जाते, प्लस पे क्लिक करते, न्यू API ऐड करते, ठीक है। ये पोस्ट API है तो HTTP मेथड को पोस्ट कर लेते, ओके। एंड पॉइंट क्या दिया था अपन ने, किसको याद है, किसको याद है, ऐड को add chorus. What did we give, post mapping add course, and with this will we go in which folder, root folder नहीं, I want to store this in which folder, course API के folder में, और इसका काम क्या है, जो लास्ट का जो एंड पॉइंट है वो लेके डाल देने का है, add course save। So here I go to run, and what was the request param, C name, right? So I go to my params and I go to C name, okay, and I give the first course as BBACA, as the application run, application has it run, what happened, okay, we did not annotate it, we did not annotate, see it is saying कि हमको वो बोल रहा है कि हम लोग को सर्विस का ऑटो वायरिंग करने को नहीं आ रहा है। सर्विस को ऑटो वायरिंग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विस को आपने क्या नहीं किया, डिक्लेयर ही नहीं किया कि ये तो अभी इसको मुझे अगर ऑटो वायरिंग करना था तो मुझे कौन से दो एनोटेशन से मैं कर सकता हूं, एनीवन, आइदर ऐड सर्विस और ऐड कंपोनेंट, आइदर गिव ऐड सर्विस और आइदर गिव ऐड कंपोनेंट, एंड रेपोजिटरी को भी करना है, बट रेपोजिटरी को कंपलसरी नहीं है इस केस में। क्यों कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सटेंड्स कर रही है JPA रेपोजिटरी को, और JPA रेपोजिटरी को रेपोजिटरी अनोटेड है, तो इसके लिए मैंने नहीं भी दिया तो भी चल जाएगा, बट सेफ साइड प्रैक्टिस के लिए दे दिया करो, सेफ साइड प्रैक्टिस के लिए आदत बनाने के लिए दे दिया करो। तो ये हो गया, तो ये इशू था कि उसको ऑटो वायरिंग नहीं कर पा रहा था। सो नाउ वंस द एप्लीकेशन स्टार्टेड, तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, वो लोग डॉकर के अंदर एक एप्लीकेशन स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, तो फिर वो एप्लीकेशन रन होता ही रहता है, साल भर, 2 साल, 3 साल रन मोड में रहता है वो, और जब जब जो एपीआई हिट करता है उसके लॉग्स जनरेट होते हैं। अभी क्या हो रहा है, ये started, now let's go to my API doc and do a send,
and see if we get the response or not. ओके उसने ऐड कर दिया कोर्स और स्टूडेंट लिस्ट नल भेजा क्योंकि अब तक कोई बंदा ये कोर्स कर नहीं रहा है। तो एक और कोर्स ऐड कर देता हूँ मैं, MCA, और सेंड किया तो उसको आईडी मिल गया ये। तो कोर्स आईडी हो गया, कोर्स नेम हो गया MCA। ओके, अभी जब मैं स्टूडेंट को करूँगा ऐड तो मैं क्या क्या चीज़ें पास करूँगा उसको। तो स्टूडेंट के लिए मैंने एक डिपार्टमेंट भी ऐड किया है। ओके, तो लेट मी शो यू ऑल दैट। तो ये अपना SamDB हो गया, इसको रिफ्रेश कर देंगे तो एक टेबल और मिल जाएगा अपने को, कोर्स नाम। ठीक है, तो मैंने डिपार्टमेंट भी एक ऐड किया था, तो लेट्स से कि कॉमर्स डिपार्टमेंट और साइंस डिपार्टमेंट, राइट। और अभी अपन ने कोर्स ऐड कर दिया। तो ये कहाँ से आ गया? Okay, so it has now course table also. So this is the courses what we have, the students what we have. A student also now needs to map to a course ID, okay, and department. Okay, so let me change the departments. Okay, as we are doing for academic now, I will change the department names to, okay, related to academics. So one is commerce and two is science. Okay, so now if I have this student Gomes, let's say Gomes is doing BBACA. So Gomes is doing which course? Course number 9. Okay, let's change the courses also to simple 1 and 2. Let's make it simple 1 and 2. So Gomes is doing BBACA. So I go over here student and I say is doing BBACA. Now which is department number 1? Commerce. Department number 1. Okay, so now when I add a next student, I have to give the department number and then I have to give the course number also. So that is what I was telling. So now when we will add a new student, we have to give all this. Okay, so now when I go to student APIs and I go to post add student using request params, do a run, do a, okay, so what all params do we pass to this? What all params do we pass to this? Let's check the proper names. Okay, so let's check the proper order of their. So we pass S name. Okay, so pass any S name from, then we pass email, pass an email, then we will pass age, 21, then we will pass D number, so he is doing which one, and then we will pass course number
he is doing course number 1, and then we can do a send. Now let's see. So once he adds, the record gets added that his ID is 11, Tom, age 21, course ID 1, department number 1. So now if I go to the database and check, my student Tom has been added with all these details. Okay, so now if I add one more student in the same department and same course, okay, so Tom is there, and let me add Jim also. Okay, Jim, add this, and let's say Jim is 22 years old. I do a send, and Jim also gets added. Okay, now if I do a get employee, now if I do a get department, now if I do a get department, or if I do a get course, okay, so now if I do get course ID 1, it will give me details of the course and those students who are enrolled for that course, because they have given student list, right? So now try to do a get course. Okay, let's do a get course. So let's take all. Okay, get single student, no, we'll take so we'll take this, and we will say get single course details, get s, what will I pass to it? So let's continue with this method everywhere, and this will return me what? One course, right? And what will I take as argument? C number. And which repository will I be using now? Which repository will I be using? Course. This service, course service, and then I will say what? Get single course. We'll follow the same function names and pass what to it? C number. So now is this function there? No, create it. And then what will we do? What will we return now? Now which repo will we use? Course repo dot find by ID. Which ID? C number. So this will give you optional. It can be there, it cannot be there. But if you want it guaranteed that it will be there, then use get. Okay, and this will return you that object. So save it, stop, do a rerun, and now you will see the difference that now let's go to API dog and get API. Get student by ID. No, this looks better. Just delete student by ID. Or this one. Get single record of student. So just copy this and create your own endpoint. So copy it, very good. Minimize this. Go to course API. Click on plus. Which is a get API, right? Paste it. What is the endpoint which we are having? Get single course details. Okay, so same thing over here. Get single course details,
do a save, do a run, do a and before sending, pass the course number as a param. Okay, so you say C number, and if I say C number as 1, and if I do a send, it will give me the course number 1 BBACA and all the students who are doing BBACA, list of that students. Yes, no, maybe. This is what I had shown you all, correct? Yes or no? Yes, sir. तो ऐसे करते, इसके पल्ले पड़ रहा है, क्या चल रहा है? समझे सर। सर फर्स्ट लाइन में वो सिर्फ कोर्स का नेम और कोर्स आईडी देता है, उसके बाद नीचे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। क्या, तो वो तीन ही चीजें है ना उसमें। एंटिटी में कितनी चीजें, कोर्स एंटिटी में जितनी चीजें है वो सब देगा वो। ये वो जेसन आया है, देख रहा है? कोर्स का आईडी, कोर्स का नेम ऊपर, आईडी नेम आ गया, की वैल्यू, फिर ये जो की है स्टूड लिस्ट, ये एक लिस्ट है, तो ये इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट आया, तो स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स लिस्ट है। अब अगर मुझे गोम्स डिस्प्ले करना है तो क्या करूंगा मैं, स्टूडेंट लिस्ट डॉट गेट ऑफ 0 डॉट गेट ऑफ एस नेम। ये जीरो इंडेक्स, ये जीरो इंडेक्स है ना, ये लिस्ट है, तो लिस्ट का कौन सा इंडेक्स है, ये जीरो इंडेक्स, और ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2। समझ रहा है? ये सब 1 वाले, सब क्या है ये 1 वाले। 2 वाला कोई बंदा नहीं है अपने पास, तो 2 वाला बंदा है जो 2 कोर्स कर रहा है। सो फेच 1 से किया है, सारे 1 वाले, ये 2 अपन ने ऐड ही नहीं किया, ठीक है। 2 वाला जब तो 2 पास करूंगा तो लिस्ट एम्प्टी आएगी, जब मैं 2 पास करूंगा तो लिस्ट एम्प्टी आएगी, क्योंकि बाकी चीजें आएंगी पर लिस्ट में से खाली आएगा, क्योंकि लिस्ट में कोई बंदा है नहीं जो 2 कर रहा हो। तो वो एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स देगा। समझ रहा है? मतलब रिकॉर्ड आया है पर कुछ रिकॉर्ड नहीं आया है, नल रिकॉर्ड। Okay, now if I want to fetch all the course details, now मुझे सारे कोर्सेज और उस पर सारे जो काम करने वाले लोग, जो स्टूडेंट्स कोर्स, ये सिंगल था ना, अब मुझे सारे कोर्सेज करनी है, तो सारे कोर्सेज का जब मैं करूंगा तो जेसन फॉर्मेट का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, कौन प्रिडिक्ट कर सकता है? सो गेट ऑल कोर्स डिटेल्स। अभी इसको कोई पैरामीटर तो पास करना है नहीं, क्योंकि ऑल कोर्स डिटेल्स तो सिलेक्ट स्टार है, तो okay, so this will not take any patch, this will be a non-parameterized function, and I'll make a function called as get all course, and this will not take any argument. This function is not there, but will give me what will it return me? अरे भाई, लिस्ट ऑफ कोर्स। yes, थोड़ा सा अलर्ट रहो, बस चौकन्ना रहो। तो सर आउटपुट ऐसा आएगा कि 1 पे जितने भी yes, लिस्ट तो है वो शुरू से लिस्ट आएगी, शुरू से ही लिस्ट आएगी, हाँ, 0 इंडेक्स पे फर्स्ट वाला, और 1 इंडेक्स पे सेकंड कोर्स। व्हाट विल दिस रिटर्न मी? कौन सा रिपो लूँ इसके लिए मैं? अच्छा सर, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट आएंगी, इसका मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट आएंगी, क्या बात है, वेरी गुड। हैड आई बीन इन द क्लास, नो, आई हैव गिवन यू अ कैडबरी सेलिब्रेशन। यस, लिस्ट के अंदर लिस्ट आएंगी, तो फाइंड ऑल क्या आएगा? अभी ये फंक्शन क्या है, फाइंड ऑल। गुड वन समरी, परफेक्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट आएंगी। बट अपने पास सेकंड वाला कोई बंदा नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, पहले सेकंड डिपार्टमेंट में भी ऐड करते कोई स्टूडेंट,
तो वो लिस्ट ऑफ लिस्ट का समझ में अच्छे से आएगा। तो हम यहाँ जाते हैं, स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट कर दिया मैंने एप्लीकेशन को, ठीक है। आई वेंट बैक टू द Eclipse and I started the application, okay. So it is now running. So meanwhile this is running, we'll go and add one more student and add him. So see, like this, no, in the corporate they arrange the APIs as per the applications. So you can open a particular API what you want. Now if you want to post a student, okay, and now let's say post one more jam को डाल दो, टिम हो गया, जॉन हो गया, सब इनको डाल दो, फॉर्मर लोग को डाल दो। तो जॉन भी 22 साल का है, 22 साल का आदमी MCA कर लेता ना, ओके। डिपार्टमेंट नंबर 1 कॉमर्स में ही है, पर कोर्स नंबर 2 कर रहा है, ओके। चालू हो गया लगता है, सेंट, ओके, ये हो गया। एक और ले लो ठीक है, एक और ले लो जो कोर्स कर रहा है, ठीक है। स्मिथ को भी ले लो, स्मिथ को भी ले लो, स्मिथ, और ये स्मिथ 22 साल का है और ये भी सेम है, ठीक है। अब जब हम वो करेंगे ना तो समझ में आएगा कि कैसे आ रहा है। तो अभी इसमें जाएंगे और अपने कोर्स वाले इसमें एक नया गेट ऑल का ले लेते हैं। पहले गेट ऑल का कोई है क्या? फेच ऑल है ना, फेच ऑल का इस पे आता ना, जस्ट क्लिक ऑन इट तो वो कॉपी कर देगा। तो नाउ गो टू कोर्स एंड ऐड एम्प्लॉय, ओके, एंड पॉइंट ले लो। सो क्या नाम दिया था वो एंड पॉइंट का, किसको याद है? गेट ऑल कोर्स डिटेल्स, ओके। सो सेम थिंग ओवर हियर, गेट ऑल कोर्स डिटेल, और ये मेथड गेट है और ये सेव है। इसमें तो कुछ पास करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नॉन पैरामीटराइज्ड है, और सेंड कर देने का। देख समरीन, शुरू से ही देख लिस्ट आया है, दिख रहा है लिस्ट? हाँ। तो अभी ये लिस्ट के अंदर सब लिस्ट रहेगा। क्या बात, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, ओके, वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय योर नॉलेज। सी नाउ, so if you can trace this down, no, I'll zoom in, I'll zoom in, screen is not visible, sorry, see now, see this, तो ये लिस्ट आ गया। तो ये पहला है, ये गेट ऑफ 0 है। तो ये गेट ऑफ 0 क्या है? डिपार्टमेंट नंबर 1, नाम BCA, उसके एम्प्लॉइज, और फिर इसका 2 MCA और उसका स्टूडेंट लिस्ट, ये सब। अरे जेसन को इंटरप्रेट करना तुमको आना चाहिए। हाँ सर, समझा ना पूरा लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो ये 0 में 0 डिपार्टमेंट आ गया, जो कि डिपार्टमेंट नंबर 1 है, उसके डिटेल्स आ गए। तो उसका कोर्स नंबर, नेम आ गया, और उसके सारे स्टूडेंट्स आ गए। और ये सेकंड में उसका नाम और आईडी, उसके स्टूडेंट्स आ गए जो अभी अपन ने ऐड किए। इसके लिए मैं ये ऐड करा, वरना ये ऐसे आता था, नल आता था, तो समझता नहीं था अपने को लिस्ट में लिस्ट कैसे आया। तो इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो ये इसके लिए कलेक्शंस बहुत अच्छे से आपका समझ में आना चाहिए आपको, तब जाके आगे जाके ये सब जेसन। तो ऐसा आपका पेलोड और ऐसा रिस्पॉन्स आता है, तो फ्रंट एंड टीम फिर इसको ट्रैवर्स करती है। तो गेट ऑफ 0, तो अगर मुझे गोम्स दिखाना है अभी, क्या करेंगे? गेट ऑफ 0 डॉट गेट ऑफ 0 डॉट गेट नेम, है ना? हाँ, 0 का 0 का नाम। अगर मुझे दिखाना है जॉन, तो 1 के 0 का नाम। ये 1 आ गया ना? हाँ, 1 इंडेक्स। ऐसा है, ठीक है। और नॉट नेसेसरी कि हम लोग हमेशा जो है ना रिपोजिटरी को इंटरफेस ही बनाएंगे, कभी कभी रिपोजिटरी क्लास भी बनाते हैं अपन, ठीक है। सो आज के लिए ज़्यादा हो गया, वो कल कर बताऊंगा।